आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि कुछ हम ऐसी बात करने वाले हैं जो अभी तक हमने हमारे चैनल पे नहीं करी है, पर कुछ ऐसी बात है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और ये बात मैं अकेला नहीं करूंगा, हमारे साथ है राजेश सर। सबसे पहले सर मैं चाहूंगा कि आप अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे कि किस तरीके से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी और हम क्या क्या कैसे कैसे आप आगे बढ़ते गए हैं। So I started, did my schooling, and then went on to do my CA in Delhi, and completed my CA. My first job was with Hutchison SR, and then I got an opportunity in Nokia. I was there in Nokia for about a decade. Uske baad, Nokia was taken over by Microsoft. I went into Microsoft, and then finally I got this opportunity of building a new business in Blackstone. So we started our journey in 2015 with acquiring about 2 malls, and now we've created the largest platform of malls in India with about 17 malls, 9.8 million square feet. देखो सर, आप मॉल्स की बात कर रहे हो, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हो। अगर हम ग्राउंड में देखते हैं तो 2010 से लेकर 2020 प्रॉपर्टी मार्केट का स्लम्प रहा है। अगर हम हमारी प्रॉपर्टीज देखते हैं या फिर हमारे रियल एस्टेट्स देखते हैं, चाहे हमारा घर हो चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टीज हो, वो इतनी परफॉर्म नहीं करी है। तो क्यों नहीं करी और आपका क्या आउटलुक है इस चीज को लेके? सो इफ यू लुक एट, अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, वेरेवर द सप्लाई इज मोर देन डिमांड, it is those places where property prices have not gone up. But if you look at commercial places, whether it be Bombay, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Pune, everywhere commercial property prices have gone up. इंटरेस्टिंग। नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जैसे बॉम्बे की बात करें तो वहाँ पे रेंटल यील्ड्स नहीं बैठ रही है हमारी प्रॉपर्टीज में, अगर हम कुछ रेंट पे दे रहे हैं प्रॉपर्टी तो ऐसा क्यों और उस पर क्या व्यू है आपका? Bombay में there is lack of space, right? Due to which the property prices are very high when you compare it to a Gurgaon or a Delhi or a Bangalore. Hence, your yield when you match it to a rent to cost is not more than 2-3%. सो आपके हिसाब से मतलब दिल्ली में ज्यादा है ROI अगर मैं रेंटल यील्ड्स की बात करूं तो? हाँ, गुड़गांव might be lower again. इंटरेस्टिंग। तो चलिए अब अपन सीधे मुद्दे की बात पे चलते हैं जो हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं रिट से। रिट होता क्या है और कैसे काम करता है और क्या इफ एंड बट होते हैं रिट्स में? ओके, REIT stands for Real Estate Investment Trust. तो SEBI came up with a new regulation allowing companies to create REITs. REITs पहले सिंगापुर बाहर होते थे, इंडिया में there was no REIT. So Blackstone was the first in terms of group to come up with this REIT on Embassy Office Park. तो और ये कब आई थी? It came in 2019. इंडिया में फर्स्ट टाइम 2019. So REIT is basically a trust that owns companies which runs or which owns malls, commercial offices, hotels, etc., etc. So I think it is the most tax efficient and liquid manner to own assets or real estate in India. टैक्स एफिशिएंट क्यों? टैक्स एफिशिएंट इसीलिए बिकॉज if you rent a house for say 25,000 a month, so the rental income that you get is taxable at 30%, a flat rate or at your marginal rate. In REITs, the return that comes, एक तो quarterly you get at least 90% of the cash flow has to be distributed semi-annually. तो IPO में company might decide not to distribute dividend, whereas in a REIT, semi-annually 90% of your net distributable cash flow has to be distributed. And what REITs have been doing, they've been distributing on a quarterly basis also. And that distribution has 3 components. Your dividend, which is around 55-60%, is absolutely tax-free. There is a capital repayment, which is again tax-free. And only the interest portion is taxable in the hands of the investor basis in which bracket he's falling. So just to sum up, generally for a REIT, at least 65 to 70% is tax free. तो अभी तक हम हमारा डिस्कशन को एक बार समराइज करें तो हम ये कर रहे हैं बेसिकली कि रेट एक ऐसी हम जैसे म्यूचुअल फंड होता है वो एक मैनेज करता है और हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम छोटे छोटे फंड्स में इन्वेस्ट कर सके। उसी तरीके से रेट खुद एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी शॉपिंग मॉल्स को ओन करता है और जितने भी उसके सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उसे एक बड़ी प्रॉपर्टी का वो एक हिस्से का पार्ट बन सके। एग्जैक्टली। और वो एक हिस्सा कितना मिनिमम होता है इंडिया में आज के दिन? ये आज के डेट में ये मिनिमम, सो
आप what you can subscribe to REIT is around 10,000 rupees as of date, and what you can resell is in the multiple of 1 unit, एंड 1 यूनिट की वैल्यू जो भी चल रही होगी मार्केट प्राइस में. which is your price. सो इसमें आपने सब्सक्राइब और सेल की बात करी. पहला क्वेश्चन यही आता है, अगर मैंने अभी तक नहीं किया, कि मैं सब्सक्राइब कहाँ से करूंगा और मैं सेल करूंगा तो कहाँ पे करूंगा, और लिक्विडिटी कैसी है इस मार्केट में. जहाँ तक सब्सक्रिप्शन की बात है, इट इज एज गुड एज योर IPO. So you log in, if you have a demat account, you log into your demat account and you subscribe. And if it is oversubscribed, it will be prorated and you will get allotment likewise. That's on subscription. In terms of selling, again, it is openly traded because all the REITs are listed REITs in which there can be private investors in India but not REITs. So in a REIT, you can again go to your demat account and just opt to sell at the market price or limit your price and then sell it. और पास्ट की जितनी भी रेट्स आई है, अभी आपने कहा कि इंडिया में बहुत लिमिटेड रेट्स रही है, उनकी क्या परफॉर्मेंस है अभी तक, ट्रैक रिकॉर्ड? हाँ, बिकॉज ये 3 REITs हैं, विच इज एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, योर माइंड स्पेस एंड ब्रूकफील्ड, एंड ऑल 3 आर इनटू कमर्शियल ऑफिसेस. अगर आप देखेंगे, एंड दीज आर ऑल पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज, इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. एम्बेसी फ्रॉम 2019 टिल डेट अ टोटल रिटर्न ऑफ अराउंड 38-39%. अच्छा. एंड माइंड स्पेस का भी देखेंगे, माइंड स्पेस इज ऑल्सो अराउंड 37-38%. इंटरेस्टिंग. और ये सारा का सारा रिटर्न्स मेजॉरिटी पार्ट मेरे लिए टैक्स फ्री हो रहा है. टैक्स फ्री हो रहा है, राइट. तो इसमें रिस्क क्या है एज एन इन्वेस्टर? मतलब अगर मैं रिस्क नहीं समझूं तो मजा नहीं आएगा. तो रिस्क क्या है रेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए? सो अगर REITs देखेंगे, REITs द अंडरलाइंग एसेट इज अ प्रॉपर्टी विच इज देयर, which may be a commercial office building, which might be a mall, which might be a hotel. And so when we're talking about malls or a office mein the risk is much lesser, but the growth is also lesser because offices are rented out to Microsoft and Googles of the world for 15 years. आपने रेंट पे चढ़ा दिया, हर 3 साल में 15% इंक्रीमेंट होता रहता है, and you get your money very risk free. When you come to malls में if you look at which we call weighted average lease expiry period, कि मेरी दुकानें कब खाली होगी. ऑफिस में 15 साल होता है, मॉल्स में एवरेज वेल इज अराउंड 5 to 6 years. So there is an opportunity of churning out non-performing brands when the expiry happens. That plus हमारे मॉल बिजनेस में क्या होता है, there is a minimum guarantee. For example, I give you a space for rent. The rent is 100 rupees and I tell you कि आनंद जी, if you do a sale of 1200, you pay me 10% revenue share or 100 rupees whichever is higher. आपने 1200 रुपये का सेल किया, 10% is about 120 rupees. So you will give me 120 rupees, not your 100 rupees, which is unlike offices. So this is the upside that we have. ये वापस एक्सप्लेन करें ना, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है. For example, मैंने आपको दुकान दिया, मैंने बोला कि you have to pay me 100 rupees as और ये रेट डीलिंग करती है ऐसी, मतलब जो भी रेट के अंदर जो मॉल्स हैं, those malls deal in the same. So the way we lease is higher of minimum guarantee or revenue share. So again, just to put it, if I have rented you a shop at 100 rupee per month, I have another clause which says कि Anand, if you do 1200 rupees of sales, you will have to pay me 10% of 1200 or 100, whichever is higher. So if you do 1200, you end up paying me about 120 rupees. ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. जरूरत पड़े तो आप वापस सुनिएगा, क्योंकि मेरे लिए भी न्यू था, मुझे भी अभी तक नहीं पता था, तो ये काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. Yeah. And that is the upside that you have on the retail business. और अगर आप रिटेल बिजनेस देखोगे, it is growing at a CAGR of about 10% in India. And there are 2-3 factors: nuclearization of families, rapid urbanization of people, and our country as a whole has the largest middle class population. जैसे आप एज अ कंपनी हमेशा आपने स्टार्टिंग में बोला कि हमारे पास 17 मॉल्स है, हमने एक मॉल से स्टार्ट किया था. आपका फोकस सिर्फ मॉल्स पे क्यों है, बाकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे क्यों नहीं है? So if you look at the group Blackstone, we have verticals. We have commercial offices, we have retail, which includes malls and hotels, and there is warehousing, there is data center. So the office part REIT has already been done along with Embassy. So this is the retail portion that we are talking about now. So अभी इस रिटेल पोर्शन में मेजरली आपका
शॉपिंग मॉल्स पे ही फोकस है। शॉपिंग मॉल्स है एंड और ये शॉपिंग मॉल्स है कहाँ पे? 17 FI में नो। So our group is the most diversified group. We have 17 malls across 14 cities. तो चालू करते हैं चंडीगढ़, इलांते चंडीगढ़, दिल्ली में सिलेक्ट सिटी वॉक, एंड देन वी हैव two malls in इंदौर, we have one mall in भुवनेश्वर, we have 3 malls in बैंगलोर। बैंगलोर के मॉल्स का नाम बताओ ना, आई एम वेरी श्योर काफी लोग जान जाएंगे। या तो शांति निकेतन, कोरमंगला is the oldest mall, 17 years, still rocking. Okay, interesting. I didn't know this. Koramangala Mall and then Shanti Niketan Mall, Whitefield Mall. These are 3 malls. One mall we have in Mysore and one in Mangaluru. So 5 malls in Karnataka, one in Chennai, one in Hyderabad, one in Udaipur. उदयपुर ऑल्सो? Udaipur also. उदयपुर कौन सा मॉल? जो मेन सिटी मॉल है उसी की बात Yes, कर रहे हो आप? yes. ओह माय गॉड, वाओ। It is called the Celebration Mall. अभी हम लोग रिसेंटली वहीं पे थे, आप मानोगे नहीं, मेरी एनिवर्सरी थी तो हम लोग गए हुए थे उदयपुर में, एंड सोचा जब रिटर्न कर रहे थे कि थोड़ा सा चिल करते देखते हैं यहाँ का मॉल कैसा है, तो हम उसी एग्जैक्ट मॉल पे थे। तो हुआ पॉसिबल तो मैं उसकी फोटो भी लगा दूंगा। Exactly. इससे पहले आप उदयपुर मॉल गए थे पहले? नहीं, पहले नहीं गया था, अभी तो रिसेंटली then you would have realized कि हम when we took over these assets from Prestige, we invested huge amount of money. सो आप इसमें करते ही हो कि पूरा का पूरा मॉल आप एक्वायर कर लेते हो? एक्वायर कर लेते हैं, एक्वायर करते हैं। वी इन्वेस्ट इन दोज मॉल्स बिकॉज नॉर्मली होता क्या है, मॉल्स फ्रॉम अ डेवलपर्स पर्सपेक्टिव, मॉल्स आर बिल्ट एज अ पार्ट ऑफ मिक्स यूज डेवलपमेंट एंड देयर फोकस 95% फोकस इज रेसिडेंशियल और कमर्शियल। मॉल इज द लास्ट बेबी इन टर्म्स ऑफ अटेंशन एंड कैपिटल इन्वेस्ट नहीं होता है। सो पीपल लाइक अस whose 95% time goes in running of malls, we acquire those malls, and with the team that we have of 70 people in head office across all functions and the expertise that we have developed over a period of time, we know ki how to reposition that mall, what are the branding that the categories that there should be, what are the anchors that we get, and people like us and Phoenix have that capability of bringing H&M to a Mangalore mall. अच्छा, तो आप मेक श्योर करते कि कंप्लीट डील टेक केयर हो? Yes, and then invest capex into it, reposition it, and again relaunch that mall. सर, अगर इतना मेरा कैपेक्स ऑलरेडी जा रहा है, आपने सपोज करते एक मॉल एक्वायर किया, उसका इतना कैपेक्स कर दिया है, तो आप कह रहे हो उसके बाद भी 38% का ROI है, वो ROI बच कैसे रहा है फिर? 38% 4 साल का है। 4 साल का है। जो द गेम इन दिस बिजनेस, इफ यू लुक एट आनंद, इज मेरा जो जितने लीजेस होते हैं, लीजेस द कॉन्ट्रैक्चुअल एस्केलेशन इज 15% एवरी 3 years, मतलब साल का 5% आपको कॉन्ट्रैक्चुअल एस्केलेशन मिलेगा। देन व्हाट हैपेंस इज रेवेन्यू शेयर, जो मैंने बोला कि अगर टेनेंट सेल, इफ यू लुक एट FY23, आवर सेल्स ग्रोथ हैज बीन अबाउट 126% इफ यू कंपेयर टू द complete pre-COVID year of 1920. With the 26% sales growth, the revenue share also grows. So that revenue share growth is about 2%. 5 plus 2 is 7%. अब होता क्या, हर साल एटलीस्ट 10% ऑफ लीजेस कम्स फॉर एक्सपायरी। ऑन दैट एक्सपायरी आइदर वी रीनेगोशिएट और गिव इट टू अ डिफरेंट टेनेंट वेयर द रेंट अपसाइड इज 20 to 22%. 10% में 20% is again a 2% increment. So 5 plus 2 plus 2 is 9%. Whatever cost optimization solar renewables you do gives you another 20%. So organic growth of 11% इस business में कहीं नहीं गया. As compared to office rental business which is around 5%, which is contractual escalation के अलावा वहाँ कुछ है ही नहीं. और जब वो MTM आता है, mark to market, जब एक्सपायरी होता है, then expiries are also a veil of about 7.98 years. That's the difference between office and the upside that you have on retail. सर देखो, हमने ना ओवरव्यू की बात कर ली है, मुझे बेस समझ आने लग गया है। अब अपन 2 एग्जाम्पल से बात करते हैं। एक अपन एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो आपकी एग्जिस्टिंग रेट है, उसका एग्जाम्पल दो कि वो करती क्या है, उसका क्या काम है, ताकि मैं एक मेरे पास रॉ डेटा हो जिसके ऊपर मैं बात कर सकूं। प्लस आपका एक और नया आ रहा है, जो अभी हम जस्ट बात कर रहे थे इस कॉन्वर्सेशन से पहले, कि आपका एक नया रेट आ रहा है। इन दोनों के एग्जाम्पल से मुझे समझाना कि दोनों में क्या हो रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट है और क्या प्रोसेस होता है। डिटेल्स बात करते हैं ना। हाँ, तो आनंद, पहले वाला जो रीट है, दो इट इज को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लैकस्टोन, आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक बिकॉज दैट्स अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ आवर प्रपोजल व्हाट वी हैव फाइल्ड विद सेबी, तो उसकी बात कर लेते हैं। उसकी बात करते हैं। तो उसकी बात ये है कि अगेन 17 मॉल्स, 14 cities, 1.3 billion sales in FY23, 130 million of footfalls, equals to the complete population of UK coming in and going out in a year. So that is the quantum of footfall that we handle in a year. And
it is stated as real estate, but it is actually your consumer business. Every day there is in terms of getting the footfall, conversion of the footfall into sales, and that sales gives us the rental yield. Now, in terms of REIT, a REIT है क्या? REIT एक trust है. So we have 17 malls, we have 17 companies. What happens is the shareholding of all these 17 companies is transferred to the REIT. ठीक है? REIT then appoints a manager. So REITs appoints a manager. That manager manages all the assets of the REIT. So all the rental income that the companies earn, the net operating income के बाद there are some expenses, you come to EBITDA के बाद then you have your cash flows. So there is a terminology which is called net distributable cash flow. So every 6 months your net distributable cash flow is transferred from the company to the trust, from the trust to the unit holders. लेकिन for our REIT we have committed, we will distribute 100% of the net distributable cash flow on a quarterly basis. जो भी आप नई रेट लाने की बात कर रहे हैं, हाँ, उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है? Again 10,000 rupees. और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है? There is no limit. सो इसमें बेसिकली आप ये कह रहे हो कि अगर मैं इस रेट का पार्ट बनता हूँ या मैं जस्ट स्टडी करता हूँ, इसको स्टडी पर्पसली समझने की कोशिश करता हूँ, तो एक रेट के थ्रू मैं 17 मॉल्स का मालिक बन रहा हूँ. एग्जैक्टली. और यही रीजन है. अब हम अभी दिल्ली में बैठे हैं. इफ यू लुक एट सिलेक्ट सिटी वॉक, द बेस्ट परफॉर्मिंग मॉल ऑफ दिस कंट्री, it does a trading density of 4,500, which means everybody who enters that mall spends 4,500 rupees. That mall is again owned by 3 partners, 2 brothers and a sister and a partner. They have different objectives in life, and this is a very old mall doing extremely well. So REIT as an instrument is lucrative from a seller's perspective because for the promoters of Select, this is an opportunity where they are transferring that physical asset in exchange of a financial asset. So they are giving that mall to the REIT and getting the units of the REIT, which is absolutely liquid. So 3 partners might have 3 objectives, right? Some might want to go and sell, take a margin loan. So that's point number 1. Point number 2, which is very important from a seller's perspective, is that transaction of transferring the asset to the REIT in exchange of units is absolutely tax exempt. For the seller also? For the seller. Abhi Select City Walks ke promoters, if they want to go and sell it to somebody, their tax base is so low, they will end up paying hundreds of crores of capital gains on it. Whereas, look at the benefit. Whereas when they transfer it to the REIT, tax free. Distribution on a quarterly basis, again 70% tax free. So that is the benefit from a seller's perspective. From an investor's perspective, I think like you mentioned, this provides an opportunity and the most tax efficient medium of owning real estate in India. So आज मैं अगर we have some money, I want to say यार residential is not yielding any rent in Bombay, I want to look at some commercial. Why do I take the headache of finding a broker, finding a property, the legality of the property and all? Instead, I just go to my Demat account. I know there's Embassy or XYZ. I buy units of the trade, which I know on a quarterly basis I'll get distribution, and there is a capital appreciation to it also. तो सर इसमें एक बात बताइए ना, जैसे म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हैं और एसआईपी को हमारे गोल से मैप कर देते हैं, तो क्या हम रिट्स में भी एसआईपी कर सकते हैं कि हमने पर मंथ इन्वेस्ट करते जा रहे हैं? यू कैन डू. इफ आप अगर अपने डीमेट अकाउंट में जाओगे, you can do your own SIP to any stock that you want. इंटरेस्टिंग. और इसमें जो आप कह रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस होगा जो क्वार्टरली मिलेगा, उसका एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकता है हमारा? क्या माइंडसेट हो सकता है कि कितना 9-7 आप कह रहे हो कि आप 100% डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, पर वो 100% एज एन इन्वेस्टर मेरी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि ये मेरे को आरओआई कितना मिलेगा, कि 5% मिल रहा है साल का, 7% मिल रहा है, 15% मिल रहा है? अभी जो ट्रेड कर रहे हैं, जो हमने सेबी में डॉक्यूमेंट फाइल किया है, उसके हिसाब से 6.9% यील्ड है, विच इज ओनली डिविडेंड यील्ड. इफ यू लुक एंड दैट डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोज बाय 9% इन द नेक्स्ट ईयर. ओके. सो इफ माय distribution in year 1 is 7 rupees, that grows by 9%, then 7 plus a 7-8% capital appreciation will happen. So आपको you should look from a
from a perspective of total return, which is around 15-16%. और मेरा टाइम होराइजन क्या होना चाहिए कभी भी रेट में इन्वेस्ट करते वक्त? Time horizon depends because REIT is again, it is conceived to be a long-term product, like we do for the blue chips, and people who don't have liquidity crunches, you can put your money here, get periodic distributions, which is kind of your annuity income that you earn. इंटरेस्टिंग. सो आपको इसमें लग रहा होगा कि इस पॉडकास्ट में मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा. दिस इज दी सेकंड पॉडकास्ट, शायद दूसरी ऐसी पॉडकास्ट है इसमें मैं चुप हूं क्योंकि मेरे लिए भी नया कंसेप्ट है और मैं भी सीख रहा हूँ. मैंने आपके साथ भी कई बार डिस्कस किया है कि मैं रिट्स के बारे में सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिट्स कैसा आ रहा है, क्या इंडिया अडॉप्ट कर रहा है नहीं कर रहा. तो मैं इतना इंग्रोज हूं इस कॉन्वर्सेशन में, इसलिए आपको लग रहा होगा बीच बीच में कि आनंद आप ज़्यादा नहीं बोल रहे. ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है. हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पहली बार में इस कॉन्वर्सेशन के कुछ पॉइंट समझने में दिक्कत आए. एक बार वापस सुनिएगा, गारंटी है मेरी कि समझ आएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा. चलिए अब फाइनली बात करते हैं रिस्क की. एज एन इन्वेस्टर मैंने चलो इन्वेस्ट कर भी दिया. मैंने फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से, मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया. मेरे लिए डाउनसाइड रिस्क कहाँ पे आती है और किस वजह से आती है? देखिए हमारे बिजनेस में एज फार एज हमारा आर रीट इज कंसर्न, इफ यू लुक एट द इनकम which we call as operating profit or net operating income, that comes from my rental escalation जो हर साल मैं बोला 5% होता है, रेवेन्यू शेयर जो 2% होता है, देन जब हम when a lease comes for expiry उसमें नया टेनेंट लेके आते हैं, उसमें we earn 20% which is another 2% and 2% from cost saving. If you add up these 4 buckets, it is 10 to 11% increase in operating profit every year. If I want to de-risk, आप बोलो कि आपका सेल्स तो बढ़ेगा ही नहीं, टेनेंट सेल्स नहीं बढ़ेगा तो मेरा रेवेन्यू शेयर नहीं बढ़ेगा. That revenue share is only 2% of that 11% or 13% of 100. That is the only risk. लेकिन the caveat to it is consumption in India has been growing at a CAGR of 10%. Malls में this consumption, total consumption taken together, but malls में जो आता है it is kind of discretionary spending. आप मॉल में क्या जाते हो, you book a cinema ticket, come out of the cinema, चलो let's have food in the food court. Food court के बाद when you're roaming about, अरे shoes are looking good, let me just say. So this is called discretionary spending. The growth of discretionary ज़्यादा हो जाती है. So if you look at discretionary spending, that is growing by 25%. And that is what is हमारे लिए, that is an opportunity, and that is what will fuel growth. Plus another thing is, in India there are about 500 malls. Those we classify into grade A and grade B. Grade A malls are malls which are about a 5 lakh square feet and above size, not strata sold. Because if you have a property which is strata sold, you will not being able to control the quality and the upkeep of the mall. And third, it has all the entertainment and all the offerings. For example, there's a cinema, there is a fun zone, there's a proper fashion about 45% or what, and good branding. So that's called a A grade mall. India mein we have only 100 A grade malls. Or if you look at New York City or a Shanghai, alone has 100 grade assets. So that is the under penetration of malls in India. So there's a huge opportunity, and there is a huge lag in terms of demand and supply. क्योंकि mall बन नहीं रहे हैं. अब developers who have to build a mall will not build on a standalone because it is inefficient. A new mall will come up which will have office, a hotel and a mall. So the demand for grade A space is very high. अगर आप देखोगे last 5 सालों में 300 international brands have entered India, because India is again part of the growth story. There are the brands of the top Indian groups, which is Tata, Birlas and Reliance. So about 1,000 stores a quarter, Indian brands plus foreign brands. That is the kind of demand, and people don't want to go to grade B malls. And because there is a huge demand of grade A malls, hence the yield on rent of all our 17 malls are grade A malls, the yield will always be higher. So if you look at the growth part,
Grade A malls, better doing malls will perform 12 to 15% in terms of year-on-year growth. Not so well-to-do malls will fare around 8 to 10%. आपका मतलब कन्विक्शन इंडिया की रिटेल स्टोरी पे बहुत हाई है, मुझे इतना जरूर समझ आ गया Exactly. You कि got it. आपका वहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है कि कैगर कितना होगा वो बहुत हाई है, तो विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। और वो इंडिया But के just to लाइमलाइट से भी रहा है। qualify, अगर आप हमारा डॉक्यूमेंट, if you look at the document that we have filed with SEBI, DRHP, we have been growing at a CAGR of 11% in the past, pre-COVID, 18 to 20. So there is no doubt why we will not grow at 11% and above. And FY23 is over. Basis the numbers that we have received, we have grown at 27% over FY20. Because there is a lot of the mindset after COVID has changed absolutely. Now the consumer wants to go out, live his life, and savings in India, which was on the forefront, I think. And when the spending pattern started, we thought this is only revenge shopping, which will last for a quarter or a two, and then quarter on quarter, the same growth rate has been there in consumer. इसमें तो सर मेरा ये मानना है कि इंडिया की जो मिडिल क्लास है, आज के दिन हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट 70-80% इंडिया की क्लास मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास है। तो इस 70-80 में से आई पर्सनली फील कि एटलीस्ट 50% ऐसे लोग होंगे जो आने वाले 10 सालों में या तो अपर क्लास में नहीं तो अपर मिडिल क्लास में चले जाएंगे। तो जब वो ये शिफ्ट होगा तो ऑब्वियसली उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, वो कंजम्पशन पे और लग्जरी पे। आजकल हम क्या कहते हैं कि यार मेरे को कार नहीं बाय करना, पर मुझे एक अच्छी वेकेशन चाहिए, मुझे एक अच्छी शर्ट्स चाहिए, पैंट्स चाहिए, मेरे को एक अच्छा फील गुड चाहिए। सो वो बहुत इंक्रीज होगा। तो मेरा भी आपका थॉट अलाइन हो रहा है यहाँ पे, स्पेशली फ्रॉम रिटेल पावर की इंडिया की रिटेल पावर बहुत बढ़ने वाली है। एग्जैक्टली, आई एग्री। तो ये अभी हमारा रेट का कॉन्सेप्ट हो गया और रेट का हमारा डिस्कशन हो गया। अब हम आपको एज अ पर्सन जानना चाहते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछने चाहते हैं, कुछ फन करना चाहते हैं, कुछ रैपिड फायर करते हैं हम लोग। और पहले रैपिड फायर से स्टार्ट करें। आप रेडी हो सर? या लेट्स स्टार्ट। चलो, तो पहला रैपिड फायर ये कि सर आपके 12th में कितने मार्क्स थे? 87%। ग्रेजुएशन पे? आई थिंक 91। आज आप क्या करते हो? आज आई हेड फाइनेंस फॉर नेक्सस मॉल्स। इंटरेस्टिंग, मतलब मार्क्स ही सब कुछ नहीं होता है। आपकी फर्स्ट कार कौन सी थी? My first car was a Sentro. सेंट्रो। और वो कब थी, कौन से साल में थी? This was I think 2003. आज आपकी कार कौन सी है? I own a BMW. इंटरेस्टिंग, कौन सी? 3 Series. 3 सीरीज, इंटरेस्टिंग। सो मतलब मैं जस्ट यहाँ पे ये कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि 12th के मार्क्स में हम बहुत फोकस देते हैं, बट वो एक सिर्फ बेस है, सिर्फ मार्क्स से कुछ नहीं होता है, हमें और लाइफ में भी इंप्रूव करना चाहिए। आपका पहला प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट? I don't used to invest in property, but ये जब REIT का एम्बेसी का REIT आया था, and I used to think we should invest in commercial property instead of residence. So that was a great opportunity where you got to invest indirectly into real estate property, and I invested in REITs. Returns? Returns I told you about 35 to 39% in 4 years, which is a CAGR of about 12-13%. आज के दिन आप सीएफओ एक कंपनी के, अभी भी कोई एक ऐसा ड्रीम जो आपका फुलफिल नहीं हुआ है? हाँ, CFO manages finance and other compliances. Dream is to someday manage the business. सीईओ बनना है। आई थिंक इस एंड पे आज का इस कंप्लीट पॉडकास्ट को खत्म करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जो सर डिटेल शेयर कर रहे थे, स्पेशली कुछ रेट से रिलेटेड, मैं आपकी रेफरेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको जाके आप स्टडी कर सकते हो। स्टडी करिए, ये एक नया कंसेप्ट है, मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, आप भी स्टडी करिए, मजा बहुत आएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस। मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग था। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आनंद, थैंक यू सो मच, प्लेजर।